षड्विंशतितम श्लोकतः 35 श्लोकपर्यन्तम्। आदौ अशोकमहोदयम् आह्वयामि। महोदय, अहं सिद्धः नास्मि, सोमवासरे निश्चयेन करिष्यामि। अस्तु, मीनाक्षी भगिनी। अहमपि सिद्धा नास्मि महोदय, किन्तु तावद् वदामि चेत् सर्वे तावदेव वदन्ति इति किञ्चित् प्रयत्नं करोमि महोदय। अहं किमपि न लिखितवती, प्रयत्नं करोमि किन्तु। अस्तु। अहं 18 श्लोकतः 30 श्लोकपर्यन्तं किञ्चित् चिन्तितवती। तत्र साधनचतुष्टयं विषयम् अस्ति, तेषां कृते अहं किञ्चित् प्रिपरेशन् कृतवती। तस्य विषये एव वदामि महोदय। आमाम्, अस्तु, स्वागतमस्ति। तत्र 18 श्लोकस्य पूर्वं शङ्कराचार्यः विवेकचूडामण्यां साधकः कीदृशः भवितुम् अर्हति उक्तवान्। अनन्तरं साधनचतुष्टयम् इत्युक्ते किम् इति उक्तवान्। तत्र प्रथम साधनचतुष्टासु प्रप्रथमम् अस्ति नित्यानित्यवस्तुविवेकः। इत्युक्ते यः एतत् नित्यम् एतत् अनित्यम् इति सम्यक्तया ज्ञातुं शक्नोति, सः नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति परिगणयते। अनन्तरं साधकस्य क्षमा इति भावम् अस्ति चेत् तत् द्वितीय साधनचतुष्टयां द्वितीयसोपानम् अस्ति। तृतीयम् अस्ति वस्तुविवेकः। वस्तुविवेकः इत्युक्ते यः निजं यः भासति, यः सत्यम् अस्ति, तेषां तयोः मध्ये भेदं यः जानाति, सः वस्तुविवेकः इति वक्तुं शक्नुमः। चतुर्थः अस्ति वैराग्यं। साधनचतुष्टासु वैराग्यम् इति चतुर्थम् अस्ति। वैराग्यभावेन एकनिमिषं महोदय, ऐ एम् थिङ्किङ्ग् हौ टु फ्रेम् द सेण्टेन्स्। वैराग्यम् इत्युक्ते बहवः चिन्तयन्ति यः गृहस्थाश्रमं स्वीकरोति सः तु वैराग्यं प्राप्तुं न शक्नोति इति बहवः चिन्तयन्ति। किन्तु तत्र वैराग्यम् इत्युक्ते यः डिस्क्रिमिनेट् कर्तुं शक्नोति, सः एव वैराग्यं प्राप्नोति इति दत्तमस्ति। तावत् पर्यन्तं महोदय। अस्तु, उत्तमम्। अग्रे छाया भगिनी। हाँ,
नमो नमः गुरुजी। नमो नमः, स्वागतम। नमः सर्वेभ्यः। अभी आद्य शंकराचार्य के बारे में क्या बोलना। अत्युच्च बुद्धिमत्ता और अत्युच्च भाव, इनका समन्वय उनमें देखने को मिलता है हमें। वो आद्य शंकराचार्य, उनके विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि जो साधना का शिखर है, वहां तक सब पहुंचे, ऐसी आशा करते हुए उन्होंने हमें साधना चतुष्टय बताया है इस ग्रंथ में। पिछले टाइम हम साधना चतुष्टय के बारे में सोच रहे थे, तभी हमने विवेक के बारे में थोड़ा सा सोचा था। हम देख रहे कि साधना चतुष्टय में 4 बातें आती है। प्रथम विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति और चौथा मुमुक्षुता। अब षट संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 बातें आती है। अब इन 6 बातों में श्रद्धा मतलब क्या? तो श्रद्धा शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्वत्व बुद्धि, उसे श्रद्धा कहा है। अभी सज्जन उसे श्रद्धा कहते हैं और कहते हैं कि जिससे वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। यह वस्तु मतलब ब्रह्म की प्राप्ति, ऐसा मुझे लगता है। अभी ये श्रद्धा शब्द अर्थ क्या हो सकता है? तो सोचते हैं तो दूसरे का जो कहा हुआ है वो सत्य मानना या प्रमाण मानना, उसे श्रद्धा कह सकते हैं। और जब बुद्धि हमारी आगे मतलब काम नहीं कर सकती, कुंठित हो जाती है, सोचते हैं तब श्रद्धा का आरंभ होता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कोई उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसा कोई हमें प्रश्न पूछता है, तब हम कहते हैं मैं कहूंगी, कह सकती हूँ मैं। फिर लगता है नहीं मैं चिंतन करके कहूंगी, अभी तो मैं बोल नहीं सकती। फिर बाद में मैं कहती हूँ मैं पूछ कर कहूंगी। मतलब बुद्धि और श्रद्धा का साहचर्य हमें देखने को मिलता है। पूछ कर कहूंगी मतलब किसी का मैं सत्य या प्रमाण मानने वाली हूँ और वो मैं पूछ कर बोल सकती हूँ। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ तर्क के आधार पर या बुद्धि जो कहती है वही मानते हैं, हमारी बुद्धि जो नहीं मानती हो हम उसे नहीं विश्वास रखते। लेकिन जो मुझे मालूम नहीं वो दूसरे से मालूम कर लेना या समझ लेना, ये तो बुद्धिवादी भी कहते हैं। और विश्वास रखना चाहिए उस पर जो मुझे मालूम नहीं उस पर, और उसे बुद्धि प्रामाण्यवाद कह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उससे श्रद्धा और बुद्धि का साहचर्य उसमें हमें देखने को मिलता है। इसलिए श्रद्धा जो है, श्रीमद् भगवद गीता का जो 17वां अध्याय है, उसमें तो पूरा प्रकरण ही श्रद्धा का ही है। श्रद्धा पर ही चर्चा की है भगवान ने, और नाम भी उसका श्रद्धात्रय विभाग योग रखा है। वैसे देखे तो मानव जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो ज्ञानारूपी करते हैं। हमें जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, समझा है, उसके अनुसार हमारा कर्म होता रहता है और कर्मानुसार उसका हमारा स्वभाव बनता है। अब इस स्वभाव का रूप ही श्रद्धा है। मतलब ज्ञान से कर्म और कर्म से स्वभाव, ऐसा होता है और उसे श्रद्धा कह सकते हैं। मतलब ज्ञान का जो परिणाम है वो मानव बुद्धि के ऊपर होता है और उससे हमारा स्वभाव बनता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं देही नाम सा स्वभाव जा। मुझे मनुष्य में जो है श्रद्धा वो स्वभाव जन्य है, स्वभावता रहती है श्रद्धा। और जितना ज्ञान भव्य उतनी ईश्वर विषयक या आत्मविषयक श्रद्धा भी भव्य बनती जाती है। इसलिए हम ज्ञान को बहुत श्रेष्ठत्व देते हैं जीवन में। अब मनुष्य जो सुनता है, चिंतन करता है, उसके अनुसार श्रद्धा उसकी बनती जाती है, निर्माण होती है उसके। इसलिए गीता में प्रकार किए हुए हैं, सात्विक, राजस, तामस, ऐसे प्रकार भगवान कह रहे हैं।
अभी उस दृष्टि से देखे तो विचार भव्य होने चाहिए। विचार भव्य होने से श्रद्धा भी भव्य बनती है। इसलिए गीता जी कहती है सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् शब्द स एव स। मतलब भगवान कह रहे हे भारत, सब मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के शुद्धि अनुसार होती है। मतलब अपने माँ बाप, गुरु, ग्रंथ, आसपास का जो वातावरण रहता है, इसमें जो सत्व होता है उसका परिणाम हम पर होता है। और जिसके पास जैसा और जितना सत्व है वैसे और उतनी श्रद्धा उसकी बनती है। इसलिए सत्वानुरूपा सर्वस्य कहा है। अभी हमारी श्रद्धा है, उसके पीछे सत्व कैसा है उस पर हमारा जीवन आधारित है। जब सत्व सुंदर भव्य है तो जीवन भी वैसा बनेगा, मगर निसत्व है तो जीवन भी निसत्व होगा। ज्ञान जितना दैवी उतना सत्व प्रभावी और उतनी श्रद्धा प्रभावी। इसलिए यहाँ शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना ये बात कही गई है। और छह संपत्ति जो षट संपत्ति जो है उसमें श्रद्धा का स्थान आया है। वैसे हमारी संस्कृति में हमारा जो पुनर्जन्म हम शास्त्रीय मानते हैं, और विचार और कृति इन दोनों का परिणाम हमारे शरीर और मन के ऊपर होता ही है। शरीर भस्मीभूत हो जाने के बाद शरीर के ऊपर का परिणाम तो नष्ट होता है, लेकिन मन के ऊपर का परिणाम बाकी रहता है, उसे हम स्वभाव कहते हैं। मतलब ज्ञान से कर्म, कर्म से स्वभाव और स्वभाव अनुरूप श्रद्धा। इस श्रद्धा को प्रभावी दैवी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना है। और इसीलिए यहाँ कहा है कि शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि हमें करनी है और उस दृष्टि से प्रयत्नशील रहना है। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा, श्रद्धा के विषय में आपने अपने विचार रखा, बहुत बढ़िया। महोदय, हाँ, अहं किञ्चित् अशुद्धम् उक्तवती। तत्र साधनचतुष्टौ तस्य क्रमभङ्गः अस्ति वा? केवलं क्रमभङ्ग एव न, द्वितीयम् अहं शम इति उक्तवती, किन्तु शम तु षट्सम्पत्त्यौ अस्ति। आमाम्। अतः षट्सम्पत्ति इति द्वितीयं वक्तव्यं वा? न, तृतीयम् अस्ति। तृतीयं। प्रथमं तु विवेकः, द्वितीयं वैराग्यं, तृतीयं षट्सम्पत्तिः। तत्र शमदमादिः तत्र अस्ति। अहं केवलं शम् इति उक्तवती, किन्तु षट् सम्पत्ति इति वक्तव्यम्। ओम् 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 महोदय। अग्रे सत्य महोदय, अहं नागच्छामि इति उक्तवान् आसीत् भवान्। आम् महोदय, किन्तु अहं किञ्चित् विलम्बेन गमिष्यामि। किन्तु महोदय, अहमपि सोमवासरे अवश्यं वदिष्यामि महोदय। अद्य न, क्षम्यताम्, अद्य सिद्धः नास्मि। क्षम्यतां महोदय। शक्यते वा सोमवासरे? आमाम्। अग्रे ज्योति भगिनी सिद्धा अस्ति वा? श्रूयते? आं महोदय। महोदय, अहं आङ्ग्लभाषा एव लिखितवती। प्रयत्नं कर्तुं प्रामाणिक इच्छा आसीत्, किन्तु अन्य कारणात् कृते एतत् आङ्ग्लभाषा easy for me to write, तो उसी में लिखा। थोड़ा क्षम्यता महोदय। नहीं, उसी में बोलिए, आंग्ल भाषा में ही। योगारूढ़त्वम। I want to talk something about yogaरूढ़
yoga, who is Yogaruda, and why Yogaruda, and how to become a Yogaruda. Our teacher has already very nicely told in the class, but what I understood and what I have seen around myself, I just want to put forth. Who is a Yogaruda? Before that, we have seen in most of our scriptures and our shlokas and all that. I am a devotee of Lalita, in the sense I love Tripura Sundari. So from my childhood, I've been chanting some shlokas of Mata. So whenever I used to see, I always used to see these namas, and I used to feel intrigued, and I used to feel influenced. Some of the namas are like Nirmama Mamata Hantri, Nirmoha Mohanashini, Nishkroda Krodashamani, Nirlobha Lobanashini, Nishpapa Papanashini, Ityadi, which clearly says she herself is Nirmoha, and if we have any moha, she destroys our mohas, she destroys our Kroda, she destroys our papas and lobha. These are all negative influences on our mind. So whichever God, whichever way we want to pray, I think everything sarva deva namaskaram keshavam pratigacchati iti vadati khalo. Tadeva, I used to think, whatever, even in Vishnu Sahasrama, there are some namas like this. So, and our family deity is Narsimha. So, Narsimha Karavalamba Stotram also says, Samsara Sagara Vishala Karala Kala. That our Guruji also told in the class. So, he says, Lakshmi Nrasimha Mamadehi Karavalambam. I want to come out of this, from the clutches of this Nakra, which is holding me in this Vishala Karala Kala Sagara. So wherever we see, whichever way we want to pray God, everything points out to getting rid of all these negative emotions and freeing ourselves and freeing our mind and letting our mind become free of all these unnecessary bondages or whatever you can say, which is going to bind us to this world. So even in Kannada, there is a famous Dasa Sahitya, we say. There are Dasas who are devotees of Vishnu, who have written in very simple way. So one of the Dasas is Purandara Dasa, who is very famous for his Devarnamas in Carnatic style of music. He also writes, Ambiga Naninna Nambide. Ambiga is the one who jo नाव को चलाता है. तो he says that please take me out of this samsara sagara. You are the one who will take me in your boat and इस पार से उस पार कर सकते हो ऐसे. So whichever way, whether it is Shruti, whether it is Janapad Sahitya, whether it is Devarnama, whether it is Carnatic music or any other kind of music, so everywhere we feel that it is only that Almighty Nirguna, whatever way we perceive that God, He is the one who, and there is a suggestion always that we have to give up our moha, give up our negative emotions. So Krishna, in a very structured way, in a proper bhumika of this Kurukshetra, he teaches Arjuna also same thing. So here Shankara Bhagavad Pada also, actually this one verse which is very similar, Bhagavad Gita 6.5 and 9 of verse 9 of Viveka Chudamani, they both start in a similar way. So always it is, your aim should be to become a Yogaruda. So now we'll see who is a Yogaruda. A person who is not disturbed by Indriyas or karmas is a Yogaruda. A person who is able to mount a horse called Manas. If Manas is a Manas जैसा एक अश्व होता है, उसके ऊपर सवार होके उसको सक्सेसफुली चला के उसको कंट्रोल में रखता है. यानी कि if somebody is able to ride the horse of our his mind and control the mind, he is a Yogaruda.
And the person who is not influenced by Indriyas and Bahya Prapancha and its karmas, and who is mentally insulated by such things, and who establishes a Purna Prabhutva on the mind, is also a Yogaruda. And in Prapanchika Vyavahara, he may use Indriyas, he may use his Manas and Buddhi, but will not have any Karma Bandhana. He is a Yogaruda. His Manas is always Antarmukhi, and he is involved in Dhyana Yoga only. So a person who has got all these qualities is a Yogaruda. Then how to become a Yogaruda? So, how to become a Yogaruda? Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhinivesha, such Panchakleshas are the waves of this. If we think that this samsara is a huge samudra or sagara, then all these Panchakleshas are the huge waves. Always we see, whenever we see a sea, we see that the wave formation is never ending. Continuously waves keep coming, sometimes overlapping, sometimes individually, which means that all these Pancha Kleshas are always overlapping each other and they are continuously forming one after the other. If we think like that, then we are always surrounded by all these Kleshas. Kleshas are nothing but miseries in our life. Then we also have this Chakra. In Kannada, we call it Chakra Tirtha, swirls. No? In water, we see water turning very fast and it will draw everything towards itself. So that we call in Kannada Chakra Tirtha. I don't know. I think it is swirls in English. So if we say aham, it's mine, me, and all these things belong to me, and I want everything for myself. Such emotions, such ragas are the swirls which we always keep pulling towards ourselves, whether we want or not, we keep pulling towards ourselves. Okay, that is another thing. The next thing is friends, wealth, our official position, profession, our pride, whatever we have, all these things, we are always if these are all small fish that are always swimming inside the ocean. So they're there always everywhere. We have to know which to pick up, which to leave, but they're there always. And then we also have this, there is something called Vadavanal. Vadavanal is Agni that is always seen inside the ocean. It will be there inside the ocean, but it's not visible. It can be felt at the deeper levels of the ocean. So such Vadavanal, our Dvesha, Krodha, all these things are like volcanoes that are there inside the ocean. So unexpectedly they may burst and come into full force. So they are there always. And different vasanas and desires are like a net or a web. We are always caught in these vasanas. So all these things are actually suffocating us in some way or the other. There is this whirlwind, there are these swirls, there is this net which we can't come out of, and it forms a very complex structure inside the ocean. So once these things are happening continuously, whether we are want or not, they are all like this. Guruji always keeps telling Rajju and Sarpa. These are all like, this is not a Sarpa, this is like Rajju, but we think these are all real things, and we have to live with all these things, and we can't come out of all these negative things like Panchakleshas or all these whatever fish, whatever web, whatever I told, we cannot come out of all these things, is our Brahma. So once these things keep increasing, then these are only perceptions of our Manas only. It is Manas and next Buddhi. But if we can come out of this, we can separate that from our real self, then we strive towards realizing who is Antaratma. We actually वो झरोके से हम देख सकते हैं अंतरात्मा कैसे दिखता है, वो उसको देखने की हम प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, only when we are able to push these things and realize that these things are all Brahmas. Like in one of the classes, Guruji was telling that we see a lot of precious stones at the bottom of a lake or a sea, and always these waves are moving, all these unwanted
creatures are moving in the water. So whatever at the bottom, whatever gems are there, we are not able to see because the water is always turbid, water is unclear. So once we get rid of all these things, when the water becomes a shant and still, then we'll be able to see the precious gems that are there, that are lying underneath. So like that, once we are able to overcome all these things, and once the water becomes stable, then only we'll realize that there are precious treasure. There is precious treasure underneath the sea. So we have to, and this we have to do ourselves. Somebody can say once the mind becomes a shant, or the water waves, whatever becomes the clear, then you will be able to see the precious gems. Somebody may say, only then you will be able to see there is treasure. It is for you to see. Like a Guruji also can show us the path. Man ko shant karo, all these things you just get rid of, then you will be able to see the treasure. But who has to do it? We only have to do it. So even in all the darshanik granthas also, it says you have to realize, you have to uplift yourself. The Guru can only show the path, but it is for you to realize your truth. So all these things are possible once you become a Yogaruda. So then I just told you who is a Yogaruda. Now we will see how we become a Yogaruda. When in deep sleep, all these things, see, we see all these negative emotions and all, these are all perceived by Indriyas. But as repeatedly in every class, almost every class, we keep listening to Swapna and Sushupti stages. In the Sushupti stage, there is nothing. It's very still, calm, happy, pleasant feeling. So we ourselves realize now that that kind of a state is also possible. It is not it's not unreal. It is something that we have experienced in the sense that happiness, we can understand that when I was in deep sleep, I had that kind of a pleasant, happy feeling, and that is our truth. So that truth we can realize ourselves. So when we have realized that in deep sleep, all these things disappear, so we can easily conclude that for a man's bandhana and moksha, mind is very important. So if we show asakti in these kleshas, then we get caught in the bandha, which is mithya. We give up and we move towards moksha. Though Shrutis do not say any method to moksha, they give all these pramanas. When we separate from anatma, we can see atma's nija swarupa. When you save yourself from drowning in the samsara sagara, you attain yoga. Okay, when you save yourself from drowning in the samsara sagara, you attain yoga rudatvam, which will lead to samyak darshana nishta. When we realize the dvandva within us, when we understand how we have to live in the Baudhika manas, we lead a Baudhika life. We also understand how we lead our life like Pashu, how we had led our life. When we realize that we have to have a Baudhika kind of a state, now when we look backwards or towards our life, past life, we realize how we behave like Pashus, and how we can have a Vyakti Vikasa if we can separate all these raga dveshas and kleshas and move towards a clear mind. Our manasu can take us away from our true self, so it can also do sarvanasha. See, as I said, our manasu can be our mitra and also our shatru. Our shatru, how it can be a shatru? We keep always feeling that these things are important. So there is a saying called manovega. Our manasu can take us to any distance, to any extent within no time. So if we let our manas for itself, then it can destroy us. However, if we can control the manas, it can become our mitra and guide us properly. We cannot assign or delegate this work to anybody.
our Manasu is there with us. He is our Mitra and he will be our companion. And with this companion, we have to realize our path ourselves. No, we cannot give this work to, जैसे किसी को बताया तुम मेरे लिए खाना बनाओ, तुम मेरे लिए घर साफ करो, तुम मेरे लिए ये करो वो करो, मैं पैसा दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, बट वी कांट से तुम मेरे लिए अंतरात्मा को ढूंढो, वो नहीं हो सकता। अगर अंतरात्मा को ढूंढना है हमको खुद ही हमारा काम हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा मनस हमारा साथ होता है, बुद्धि भी हमारा साथ देना है। वो देने के लिए हमें उसको ट्रेन करना है। जब हम करते हैं तो हम डेफिनेटली अंतरात्मा को रियलाइज कर सकते हैं। Even the Guru can show us the way, but we have to work, strive towards this ourselves. So why we should become Yoga Rudha? Even the Adhunika Manovijnana says the method of Antarvikshana is very important to enrich our lives. So this Bhagavan Shri Krishna had told 5,000 years back that Antarvikshana is very important for realizing our potential, realizing our happiness, whatever good virtues that we want to have in our life. Antarvikshana is very important to enrich our life also. So how we can attain Yoga Rudhatvam, and why we have to attain Yoga Rudhatvam? To realize moksha, to realize Samyak Darshanam, Atma Darshanam, and also to enrich our lives and to lead a peaceful, stable, and then Sthita Prajna state throughout our life is the essence of Shloka 9, I feel, in Viveka Chudamani Mahodaya. Astu Mahodaya. धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। बहुत बढ़िया सामंजस्य से आपने दोनों पक्षों को श्रीमद् भगवद गीता और विवेक चूड़ामणि के ग्रंथों को लेकर के दोनों ग्रंथों का सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी बात को यहाँ स्थापित किया। बहुत बढ़िया। और भी शीला शेखर भगिनी। नमो नमः महोदय। अहं 2-3 वाक्यानि एव वक्तुं शक्नोमि। आदिशङ्कराचार्यः जगद्गुरु उक्तवान्, पुनः पुनः एवम् उक्तवान्, मोक्षगति प्राप्तुं किं करणीयम् इति पाठितवान्। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखृङ्गरणे इति रचना। तत्रापि अतीव सरलतया मोक्षगति प्राप्तुं किं करणीयम् इति पाठितवान्। अत्र विवेकचूडामणि द्वारा पुनः पुनः मोक्षगति प्राप्तुं भक्ति करणीयं। भक्ति एवं कर्मयोग एवं भक्ति योगः अतीव उन्नतम् इति अहं चिन्तयामि। एतत् स्पिरिचुवालिटी विषये अहं नूतन छात्र अस्मि, इतोपि पठितुम् इच्छामि। तदेव महोदय। बहूनि वाक्यानि उक्तवती भवती। धन्यवादः महोदय। अग्रे सुप्रिया भगिनी वदति वा? महोदय, हम पुस्तक में से पढ़ के सुनाऊंगी। सुनाऊं क्या? लिखा नहीं। नमो नमः महोदय, श्रूयते वा? हाँ, इदानीं
मैंने लिखा नहीं, लेकिन पुस्तक में से पढ़कर बोलो क्या? हाँ मैम। धन्यवाद महोदय। यहाँ मनुष्य ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं, उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना है। तीसरा क्षमा दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है वही नित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मालोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य योग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। बारंबार से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार के सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसको सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसको समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि छठ संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती हैं। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होती हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहाँ समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रति के समान अभ्यास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। सम्यक। गुरु और शास्त्र वाक्यों में विश्वास है अपने श्रद्धा के विषय में। तो गुरु कौन गुरु होते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रथमः गुरुः का माता प्रथमा गुरु। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है माधव। इदानीं सम्यक् अस्ति? हाँ महोदय। अब ठीक है। फिर से आ रहा है। स्पीकर का कुछ आवाज आता है। अस्तु। जन्मना सह एव माता ज्ञानस्य सूत्रपातं करोति, अतः माता प्रथमगुरुः। गुरोः अपि गुरुतरा विद्यते माता। अन्येषां गुरूणां ऋणात् मुक्तिः तु संभवा, परं मातुः ऋणात् विमुक्तिः अत्यन्तं कठिना अस्ति। अनन्तरं द्वितीयः गुरुः कः जीवने? पिता।
पिता ज्ञानस्य सः अपि फिर से डिस्टर्बेंस आ रहा है। न श्रूयते महोदय। वृद्धावस्थायां यदा पितुः शरीरं कृशं भवति, अशक्तं भवति, तदा पुत्रः पुत्री वा तस्य कार्यं करोति, सहायकः भवति, सः गुरु इव कार्यं करोति। अनन्तरं पत्नी अपि परामर्शकत्वेन गुरोः भूमिकां निर्वहति। इत्युक्ते यः ज्ञानं ददाति सः गुरुः। अत्र परस्परं सम्बन्धस्य का अपि भूमिका नास्ति। मार्गे पथप्रदर्शकः अपि गुरोः कार्यं करोति। अतः अस्माकं जीवनं गुरुशिष्ययोः धारा इति कथ्यते। गुरुशब्दः ग्री धातोः निष्पन्नः। ग्री इत्यस्य अर्थः गिरति गिलति इत्युक्ते यः शिष्यस्य पापानि निगिरति सः एव गुरुः। गुरोः अत्यन्तं दुष्करं कार्यमस्ति। शिष्यस्य अवगमनं, तस्य भावभूमेः अवगमनं, तस्य पूर्वजन्मनः संस्कारावगमनं, ततश्च अग्रे विस्तारक्रमनिश्चयः इत्यादीनि सर्वाणि गुरोः कार्याणि सन्ति। जीवनस्य ज्ञानम् आकारात् आरभ्य हकारं यावत् सीमितं भवति, यत् अस्माकं वर्णमालां दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्यते। यदि केनापि पूर्वजन्मनि पकार फकारं यावत् ज्ञानमर्जितं तर्हि अस्मिन् जन्मनि ततो अग्रे ज्ञातव्यम्। अवगमनं विना यदि तस्मै पुनः अकार आकार ईकारेभ्यः आरभते तर्हि अनर्थः भवति। प्रथमं तस्य मनः एव न लगिष्यति। एतदपि भवितुं शक्नोति यत् पूर्वजन्मनः अपि ज्ञानं समाप्तं स्यात्। अस्मिन् धरातले गुरोः भूमिका अतीव महत्वपूर्णा भवति। किन्तु अधुना वयं पश्यामः यत् धनिकशिष्यान् दृष्ट्वा नैके गुरवः मेलितुं शक्नुवन्ति, परं तस्य पूर्वजन्मनः आधारेण भविष्यस्य आवश्यकताः अधिगम्य तस्य आवरणम् अपाकर्तुं समर्थाः गुरवः दुर्लभाः एव सन्ति। शिष्यस्य स्वभावस्य अनुरूपं सः सिद्धः करणीयः। गुरोः स्थानं तु अतीव उन्नतं भवति, ईश्वरादपि उन्नतं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। एवं गुरुणा सह अकृत गुरुः भयंकरं पापं भवति। एकतः गुरोः दानात् एवमपि ऋण विमुक्ताः न भवन्ति, अपरतः अकृत गुरवः रसातले अपि स्थानं न भविष्यति। एतादृशानां जनानां कृते अकाल मृत्युः, शस्त्राघात सदृशीनाम् अघटित घटनानां विवेचनं प्राप्यते। इत्थमेव मातुः ऋणात् विमुक्त्यर्थमपि अधिकाधिक प्रयासः विधेयः। पिण्डदानेऽपि मातुः पिण्डं शेष सर्वपिण्ड
योग समानं भवति। माता केवलं माता एव बालकं ऋणविमुक्तं कर्तुं शक्नोति। एवं गुरुमहिम्ना अस्माकं शास्त्राणि परिपूरितानि सन्ति, किन्तु योग्यस्य गुरोः कृते एव एतत् सर्वं सम्भवति। गुरुः यः अहङ्कारात् विमुक्तः भूत्वा शिष्यं सिद्धयति, सः आत्मानं ऋषेः ऋणात् विमुक्तं करणस्य भावेन ज्ञानस्य प्रसवं करोति। लोककल्याणस्य भावेन एवं तपः स्वरूपं मन्यते। सः पूर्णमनोयोगेन शिष्यम् आत्मनः प्रतिबिम्बं मत्वा स्वप्रतिनिधिरूपेण सिद्धं करोति। भाविनः जीवनस्य आवश्यकताः पूर्णाः कर्तुं तं सिद्धयति, जीवितुं सामर्थ्यं प्रददाति, उत्तम अधमयोः भेदं शिक्षयति, ईश्वरे आस्थां प्रतिष्ठापयति, जीवने शान्तेः मार्ग प्रशस्तं करोति, इतोपि ज्ञानस्य आलोकदानं करोति। ज्ञानस्य अपि बहूनि धरातलानि सन्ति। इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञानयोः समावेशः विकासाय आवश्यकः। एतदर्थं व्यक्तेः सूक्ष्मं धरातलं सिद्धं करणीयम्। उपासनायाः मार्गः यः अस्ति, मन्त्रदीक्षादयः एवमेव क्रमम् अग्रे सारयति। तस्य व्यक्तेः क्षमता विविधशक्तिः वर्धयति। अनेन जनेषु नवानुभवानां सञ्चारः भवति, आत्मना गूढपरिचयः भवति, नूतनः च आत्मविश्वासः जागर्ति। जीवनात् रजस्तमसौ उदारतारूपसत्त्वे परिवर्तयितुम् एकः अनवरतः क्रमः आरभते। अयमेव अस्माकं जीवनस्य विकासमार्गः। त्रिगुणावरणं पारयित्वा स्ववसीय स्वरूप अंतर मनसः अवगमनमेव ज्ञानस्य चरमलक्ष्यमस्ति। यावत् अस्मिन् जन्मनि सम्भवति तावत् करणीयम्। शिष्टम् अग्रिम जन्मने अवशिष्यते। प्रायः प्रश्नः पृच्छन्ति, अस्मिन् जन्मनि मोक्षं तु भविष्यति वा न भविष्यति, चिन्ता न करणीया। नूतन जन्मनि पूर्वजन्मनः अभ्यासस्य स्वतः उपयोगः भवति। एवम् उन्नतेः क्रमः भवति। अतः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् इति उक्त्वा भगवता श्रीकृष्णेन स्पष्टीकृतम्। एवं गुरुः कः गुरुः भवितुमर्हति एतस्य विषये अत्र एका चर्चा उपस्थापिता मया। अग्रेपि अन्ये केपि यदि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् स्वागतम्। स्वेच्छया वक्तुं शक्नुवन्ति। ये सोमवासरे वक्तुम् इच्छन्ति ते सज्जतां कृत्वा सोमवासरे वदिष्यन्ति। एकः प्रश्नः अस्ति महोदय। जी जी। हमेशा गुरु की आवश्यक होता है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन कहाँ ढूंढे गुरु को और कैसे ढूंढना भी हो सकता है, लेकिन रोज 1000 प्रश्न उठता है।
गुरु से पूछने के लिए, ये कैसे हो सकता है? गुरुः एव शिष्यं परीक्षते। जिस दिन के मन में इस तरह की कामना हो जाती है, उस दिन गुरु या शास्त्र वाक्य है। न श्रूयते, किञ्चित् डिस्टर्बेन्स् अस्ति। भवत्याः डिवैस् मध्ये एव डिस्टर्बेन्स् अस्ति शीला भगिनी। ओ ओके,